Hello everyone, good morning. I hope you are fine. Ita. So today we are starting our next topic, impulse. Yesterday also discussed about their impulse. So due to some problem, then again in short we are discussing. Then we will solve some question related to our chapter force and motion. Okay. So impulse, beta. What is impulse? What is impulse? That is, impulse is an impact by any object for a short time with a large force. ओके किसी बॉडी को क्या दो बॉडी स्ट्राइक कर रही है तो इतनी जोर से स्पीड में आ रही है स्ट्राइक करने के लिए फोर्स तो ज्यादा लगा बट फॉर अ स्मॉल मूवमेंट दैट इम्पैक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द इम्पल्स. इसको क्या बोलते हैं हम इम्पल्स बोलते हैं. सो लार्ज फोर्स वी कैन से लार्ज फोर्स फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. Small interval of time is known as your impulse only. So mathematically again we can write there change in momentum. Impulse is change in momentum. Change in momentum. Okay, how we can write change in momentum? Change in momentum means we can see change in momentum by using Newton's second law. We can write there momentum by Newton's second law, then we can write there F by del T. Okay, change in time, because by Newton's second law force, external force will be equal to change in momentum per unit change in time. So here P2 minus P1 we can write there here force into change in our time. So this one term change in momentum we can write there del P equal to force for a small impact. Any body, any object is traveling with a fast speed, बहुत ही ज्यादा तेजी से चल रहा है, then it will strike on any where that any ball, कि अगर ये बहुत ही फास्ट स्पीड से मैं फेंक रही बॉल पे स्ट्राइक करेगा तो फोर्स क्या लगेगा, एकदम से हिट करेगा, ज्यादा लगेगा, बट अ फॉर स्मॉल मोमेंट देन इट विल बी डेंजरस. ओके, इट कैन बी इंजर्ड. सो इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं. ड्यूरिंग अ प्लेइंग अ क्रिकेट या विद एनी बॉल, देन एज वी आर कैचिंग दैट बॉल वी आर कीपिंग आवर हैंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वी आर इंक्रीजिंग आवर इम्पैक्ट टाइम. हम टाइम के इम्पैक्ट करने का, उसको स्ट्राइक करने के टाइम को इंक्रीज करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर डिक्रीजिंग लोअरिंग डाउन योर हैंड. हाथों को क्या लेके जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं ड्यूरिंग कैचिंग दी बॉल. ओके, कैच जैसे जैसे इम्पैक्ट टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा. फोर्स डिक्रीज करेगा तो हमारे हाथों के लिए क्या होगा, दैट विल बी लेस इंजर्ड, दैट विल बी लेस हार्मफुल एज कंपेयर टू वी विल कैच आवर बॉल एंड एज वी आर अपर आवर हैंड. ओके, सो दिस वन आवर इम्पल्स. इम्पल्स क्या, चेंज इन मोमेंटम होता है. सो बाय यूजिंग दिस वन ग्राफिकल मेथड वी कैन राइट देयर यूजिंग ग्राफ, using force time graph. So impulse will be equal to change in momentum. Okay, as we are drawing their force time graph, any force time graph we are making, then in the force time graph we are drawing any curve like this one, A and B curve we are taking. Then in this one that curve is indicating area under the curve. इस कर्व के नीचे तक का जो भी एरिया होगा, so that will be equal to impulse. So impulse we can write there, impulse will be equal to area under the curve. Which curve? In your FT ग्राफ जो AB कर्व होने बना, इसके नीचे का एरिया किसके इक्वल होगा, आपका फोर्स इनटू change in time. For a small change in time, that is known as the impulse only. So by help of the graph we can find like this one. Okay, I hope you understood better. We discussed yesterday also. So now we are doing some question related with it. Now here let any object
start moving with 5 meter per second for a 10 second. For a 10 second. Then after 10 second, its velocity becomes 30 meter per second. Find force. Find force if mass of object ten kg. Okay. Then how we can find beta? Then find impulse also. That how we can find impulse? Find in this only. Find impulse also. Okay. So how we can find this one? First we will see that which terms are given in our question. Initially body is moving with 5 meter per second, so that's why we can write their initial velocity of this one u equal to our 5 meter per second. Then for this 10 second it is traveling. Time is given here 10 second only. 10 second के लिए क्या कर रही है, वो ट्रेवल कर रही है. देन आफ्टर द 10 second its velocity becomes 30 meter per second as it will strike on this one. Okay, so finally its velocity becomes 10 meter per second. Clear? Then find the force if mass of the body is 10 kg. तो आपको फोर्स निकालना और क्या निकालना, इम्पल्स निकालना है. तो फोर्स निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? दैट बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ देन फोर्स वी कैन राइट देयर F इक्वल टू ma. सो नीड हियर एक्सेलरेशन हाउ वी कैन फाइंड देयर? बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन वी कैन राइट देयर. अब m तो गिवन है, a इज नॉट गिवन बट वेलोसिटीज आर गिवन. सो विद हेल्प ऑफ दिस गिवन फैक्टर्स देन हाउ वी कैन राइट देयर? बाय यूजिंग first equation of motion. By using first equation of motion, then here we can write there v equal to u plus at. So v minus u equal to at we can write there, and v minus v final velocity, initial velocity. So here we can write there 30 minus 5 equal to a. A we want to find out. Time is equal to our 10 second. Time is 10 second. A equal to our 25 by 10. It will be 2.5 meter per second square. This one will become our acceleration. तो acceleration यहाँ से क्या आ गई? 2.5 मीटर पर सेकेंड. हमें निकालना क्या है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स. तो फोर्स के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है? F इक्वल टू ma. मास इज गिवन इन आवर क्वेश्चन 10 kg. acceleration is 2.5. मास आई थिंक 10 ओनली ना. Mass is 10 kg and your acceleration 2.5. That's why as we are putting here, then here we can write with a 25 Newton force will be come out. Write always SI unit which quantity are there, then with help of the unit only we can identify. So next we have to find out impulse. Impulse, how we can find beta? For the impulse we should know about this one, that is our change in momentum. Change in momentum, that is impulse only. तो change in momentum क्या होगी? Final momentum minus initial momentum, that we can write there change in momentum. Final momentum हमें linear momentum का पता क्या होता है? That is final mv minus mu. Mass into velocity will be, we can call it linear momentum. So mass here final velocity minus mu initial velocity.
So as we are putting their value, then m we can take outside, then v minus u will be their change in velocity. So how we can write its value? M is equal to 10 kg only. Final velocity, finally its velocity becomes 30 meter per second. Initially it is velocity 5 meter per second. So putting this one here, then here we can write their final velocity 30 meter per second, initially 5 meter per second. So after that we can solve it. Put here 5, then solve it. Here will come 10 into 30 minus 25 and 5, then here 25 will be there. So our impulse will be come out here. Impulse in your question, then it will be a 25. And unit, how we can write it in it? That is change in momentum, depend upon the momentum, kg meter per second. That is unit of the impulse. क्योंकि change in momentum होता है, और momentum क्या है आपकी mass into velocity. Mass into velocity को how we can write there? kg meter per second. Clear? And it is our vector quantity, because momentum also our vector quantity. So impulse also will become our vector quantity. So next question we are doing beta using the graph. For example, your graph is given. So how we can find there? Let your question is there. We have to find out using find momentum. Find momentum of object if mass is 10 kg as given in xt graph. ओके क्या गिवन हमें? xt ग्राफ गिवन, और xt ग्राफ क्या गिवन है? दिस वन आवर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज गिवन x मीटर पर सेकेंड, sorry meter only, x is our distance, so this one we can write there meter only, and t is our time, that is in second only. So using this one graph we have to find out momentum. ग्राफ में क्या पॉइंट्स गिवन आपको? here origin 0 1 2 3 4 2 4 6 8. Okay, here graph is given like this one, P Q R S T. These points are given. So can I find the momentum of the object in this one? Mass, if mass is 10 kg as given in your xt graph. Okay, then your along first one, along path P to Q. Okay, next your Q to R. Okay, here in two cases we have to find out momentum. So how we can find? So see here how we can find beta using this one graph. First we should know about there what is the formula of momentum. How we can find it? This one. So momentum is equal to our, find the momentum using this one. Momentum, how we can write there? Mass into velocity, m into v. Okay, that is momentum only, mass given but velocity is not given. So your xt graph is given. So using xt graph first we should know about their velocity, then only we can find their momentum. तो velocity कैसे find करेंगे बेटा? फर्स्ट केस we are taking their along curve. Which curve? किस curve के along पूछ रहा है? along curve PQ curve. Okay, in xt graph. xt graph के अंदर PQ curve के अंदर first we should know about their velocity. Okay, so velocity will be equal to slope of this graph. Slope of xt graph. स्लोप क्या होता है? चेंज रेशियो अलोंग y एक्सिस टू दी
एक्स एक्सिस, कितना चेंज आ रहा है. सो वेलोसिटी इक्वल टू चेंज अलोंग वाई एक्सिस. अब देखो P टू Q कर्व, यहाँ से यहाँ तक की कर्व है, तो इसके नीचे का जो एरिया होगा वो हमारा क्या देगा, सॉरी P टू Q कर्व, स्लो एरिया नहीं निकालना, हमें क्या निकालना, स्लोप निकालना. This one slope we have to find out of this curve. Okay, slope we have to find out from here to this one. So from here to there, how we can find it? Sorry, change along y axis. Along y axis, that means your distance is given x2 minus x1. Change along x axis, x means time. So here we know about the velocity is equal to displacement by time is velocity only. अब यहाँ भी ग्राफ में यही निकालेंगे, तो इसको स्लोप निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगी, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी. तो हम फर्स्ट PQ के अलोंग निकाल रहे थे, तो PQ के अलोंग कितनी निकलेगी, here velocity we can write there. This one your final point, on this one point here your x2 equal to your 2, initial point is 6 hours. Now finally time is your 2 only, and on this one point time is 0 only. So here left 6 minus velocity will be there minus 4 by 2. Then it will be our come minus 2 meter per second. ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई. ओके, तो मोमेंटम क्या हो जाएगी इसके लोग. सो मोमेंटम वी कैन राइट देयर मास इनटू आवर वेलोसिटी. मोमेंटम मास विल बी इक्वल टू योर 10 kg and velocity will be equal to 2 meter per second. So it will be a 20 meter per second. We are writing beta magnitude only. Negative means that is velocity is decreasing there finally. Okay, that's why it is negative. Negative sign क्या indicate कर रहा है कि initially having some large velocity and after some time its velocity will be decreased. Okay, that's why this one negative sign is indicating. So momentum in that case P से Q तक की momentum क्या निकल के आ गई हमारे पास, mass into velocity, then it will be 20 meter per second. So next कह रहा है Q से R तक, Q to R. In next case momentum second part along curve Q to R. Okay, in X graph, XT graph, in XT graph. Okay, so how we can find there in XT graph here, Q to R में क्या होगा, final minus initial. Again we will find their slope. Okay, so how we can find their slope along this one, your P equal to your MV, know about this one. So V equal to your change along x axis, y axis to the change along your x axis, T2 minus T1. So how its changes take place, see here, finally its value is 2 only, initially also 2 only. Okay, then divide by this one, means here velocity is constant only. Yes na. So here 2 minus 2 divided by your whatever t, then it come here 0 only. Velocity क्या आई हमारी, 0. Okay, कोई change ही नहीं हो रहा. If velocity will be becomes your 0, so momentum will be equal to your 0. I hope you understood beta. If your graph is given, then with help of the graph how we can find beta, दो ही टर्म हमें लर्न रखनी है कि कोई भी ग्राफ गिवन हो तो दो ही टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, या तो वहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं या एरिया निकाल सकते हैं. दैट वी हैव टू चेक विद हेल्प ऑफ द फॉर्मूला. ये हमें अपने फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, जो टर्म हमें फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा उस पर डिपेंड करता है कि हमें वहाँ स्लोप निकालना है या फिर एरिया निकालना है. तो यहाँ पे क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सटी ग्राफ को यूज करते हुए मोमेंटम निकालनी थी. तो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट देयर मोमेंटम. मोमेंटम क्या होती है हमारी, मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. अब मास तो हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है बट वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो वेलोसिटी कहाँ से आ सकती है, एक्सटी ग्राफ गिवन है तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं. अब हमें पता है एक्सटी और वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, that is v equal to displacement upon time. Okay, x by t means ratio of your along y to x. और रेशियो कहाँ से निकलेगा, अगर हम उसका स्लोप निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा. दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग देयर स्लोप फॉर फाइंड आउट वेलोसिटी. उसका स्लोप निकालने के लिए क्या हमने वेलोसिटी निकाली. ओके, वेलोसिटी से हमारी क्या मोमेंटम क्या आ जाएगी, मास इनटू वेलोसिटी. हम यहाँ पे पुट किया तो मोमेंटम आ गई हमारी 20 मीटर पर सेकेंड.
Okay, like this one we can solve their questions related to our graph. Okay, इसी तरीके से अगर आपको इम्पल्स निकालना है, ग्राफिकल क्वेश्चन गिवन है, तो इम्पल्स के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पहले फर्स्ट यू शुड नो अबाउट देयर फॉर्मूला. ओके, कि यहाँ से अगर वो पूछता कि चेंज इन मोमेंटम हाउ मच विल बी देयर, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ से कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल पॉइंट पे अगर P फॉर एग्जांपल P Q पर के लिए पूछ रहा है, तो फाइनल मोमेंटम और Q पॉइंट इनिशियल दिस वन, देन यूजिंग दिस वन where FT graph is there, with help of the force time graph we can find their impulse. Okay, force will be there and change in time will be there. अगर force time graph ना भी given, a momentum time graph given, then also we can find there with help of this one force. ओके, मोमेंटम टाइम ग्राफ गिवन है, अगर आपको फोर्स फाइंड करना है तो इस केस के अंदर फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. इस वहां भी उसका क्या निकाल देंगे? स्लोप निकाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? फोर्स निकल जाएगा. ओके, तो ये आई होप यू अंडरस्टूड बेटा हाउ वी कैन फाइंड देयर ग्राफिकल क्वेश्चन विद हेल्प ऑफ दीज ग्राफ्स. Okay, by using your equation of motion, by using laws of motion given by the Newton, second law F equal to ma, by using your change in momentum. So thank you for watching today our video. So in next class we will discuss some more question related to our this one unit. Thank you.